So next very important point, company car. If the car is provided by the company to employee for his private use, then how to assess the taxable benefit? Then in that case, benefit will be assessed as adjusted list price of cars multiplied by CO2 emission percentage. Adjusted list price का क्या मतलब है? It means market price ignoring bulk discount. Market price ignoring bulk discount मीन्स अगर कंपनी अपने 6-7 डायरेक्टर्स के लिए कार्स प्रोवाइड कर रही है और इन्होंने कार प्रोवाइडर से नेगोशिएट कर लिया, प्राइस डिस्काउंट हासिल कर लिया, तो वी डोंट हैव टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. लाइक इफ अ प्राइस ऑफ अ कार इज 10 lakh एंड कंपनी हैज़ अरेंज अ डिस्काउंट एंड obtained दैट कार फॉर 9 lakh, we have to consider the 10 lakh which is the list price. Cost to employer for additional accessories should be added to find out the adjusted list price of car, but amount contributed by the employee should be deducted. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि whatever amount is paid by the employee to get that benefit will reduce his taxable benefit. But यहाँ पे condition ये है up to 5,000. What does it means? It means कि for example एक cost of car जो है वो 20,000 है एंड एम्प्लॉय उसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है 4,000 की, तो ऐसी सूरत में आपके पास 16,000 की वैल्यू एडजस्टेड प्राइस में कंसिडर की जाएगी. बट अगर कॉस्ट ऑफ कार जो है आपकी 20,000 ही है और एम्प्लॉय 5,000 की कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इन दैट केस द एडजस्टेड प्राइस वुड बी 15,000. नाउ कंसिडर इफ एम्प्लॉय इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 5,000, लाइक the employee is contributing 6,000. In that case also we don't have to deduct the 6,000 figure, we can maximum deduct 5,000. So the benefit adjusted list price of car will remain 15,000. Second rule जो हमने पढ़ा था कि if the car is provided for the part of the year it should be time apportion, so time apportion की जाएगी. Next, employees contribution for the private use of car, ये दोनों आपके पास वही रूल्स हैं जो कि टैक्सेबल बेनिफिट को असेस करने के हवाले से जनरली यूज़ होते हैं. नाउ इफ़ मोर देन वन कार इज़ प्रोवाइडेड, सेपरेट टैक्सेबल बेनिफिट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच कार इन सेम वे. अगर एक से ज़्यादा कार प्रोवाइड की गई है तो सेपरेटली दोनों कार्स का अलग-अलग इनकी कैलकुलेशन की जाएगी. नो एक्स्ट्रा बेनिफिट विल अराइज फॉर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट. आपके पास अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मेंशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेंशन है, रनिंग कॉस्ट मेंशन है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड नहीं होगा. एडिशनल सेपरेट बेनिफिट विल अराइज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर. कोई एडिशनल सेपरेट बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है तो उस बेनिफिट की जो कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ रही है, एम्प्लॉयर को खर्च करनी पड़ रही है, दैट इज़ द टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय. लाइक इफ अ ड्राइवर इज़ प्रोवाइडेड फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ कार, द salary of that particular will be considered as a benefit for the employee. Now about car fuels for private motoring, but before that we have to consider the percentage, CO2 emission percentage. For CO2 emission percentage, we need to consider what is the CO2 emission per kilometer. Like if CO2 emission is between 51 to 54 gram, then subsequently we have to consider another factor, whether the car has meet the RD2 standard or not meeting the RD2 standard. In both cases the percentage rate is different by 4%. Yani if the car has a CO2 emission of 51 to 54 grams, then in case if it is a RD2 standard, the car is meeting the RD2 standard, then percentage 15 है. And if the car is not meeting the RD2 standard, then percentage is 19. So अभी हम बात करते हैं सिर्फ उन कार्स की कि जो RD2 स्टैंडर्ड मीट करती हैं. 51 to 54 grams, the rate is 15%. If the CO2 emission is exactly 55 gram, the rate would be 16. And now with every 5%, 5 grams of increase, 1% would be added to this percentage. Means if the car has a CO2 emission of 60 grams, the percentage would be 17%. And if the car's CO2 emission is 65 grams, the percentage is 18%, and so on. This percentage will increase but up to 37%.
राइट। सो आपके पास हर 5 ग्राम CO2 एमिशन इंक्रीज होने पे 1% आपके पास पेट्रोल कार और डीजल कार जो कि RD2 स्टैंडर्ड मीट करती हैं उनकी 1% ऐड हो जाएगी। सो व्हाट इफ दैट इफ द CO2 emission is given to you in terms of 67 grams, means they are not exactly multiples of 5. In that case, what you have to do? Remember that for calculating this, first of all, if the CO2 emission is, let's say, 67 grams, you have to round it down to 65. यानी आपने से exact multiple पे लेके आना है, 5 के multiple पे लेके आना है, लेकिन उसके लिए round down करना है। If the car has a CO2 emission of 89 grams, तब भी आपने से राउंड डाउन करके 85 पे लेके आना और 85 की बेस पे कैलकुलेशन करनी, राइट। सो अब फॉर एग्जांपल 85 की बेस पे कैलकुलेशन कैसे होगी? दिस इज 85 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5। आपके पास ये आ जाएगी कि कितनी परसेंटेज आपने 16 में ऐड करनी है। तो 85 माइनस 55 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, तो ये 6% अब 16 में ऐड कर देंगे, यानी 55 ग्राम्स की तो 16 फिक्स है। अब आपने ये देखा कि 55 ग्राम से कितनी ज़्यादा CO2 एमिशन है, 30 ग्राम ज़्यादा है। तो हर 5 ग्राम्स पे चूँकि आपके पास 1% का इजाफा हो रहा है, तो 30 ग्राम्स इंक्रीज़ होने पे 6% का इजाफा हो जाएगा और टोटल परसेंटेज 22% हो जाएगी, राइट। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द 140 ग्राम्स, यू हैव टू डिडक्ट 55 फ्रॉम देयर and divide by 5. So 140 minus 55 will give you 85. 85 divided by 5 will give you 17%. So 17 plus 16, 16 55 ग्राम्स का, ये 33% आ जाएगी। सो इस हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो if a car has a CO2 emission of 160 gram, if a car has a CO2 emission of 160 gram, then in case the percentage would be 37. तो आप यहाँ पे याद रखें कि अगर आपकी कार की CO2 emission 160 ग्राम से ज़्यादा होगी तो तब भी परसेंटेज 37 ही रहेगी, परसेंटेज 37 से नहीं बढ़ेगी। ये पॉइंट याद रखना है। अब इस सिलसिले में आपके पास सेकंड पॉइंट जो कंसिडर करना है वो ये है कि इन केस ऑफ डीजल कार विच आर नॉट मीटिंग द RD2 स्टैंडर्ड, आपने 4% का इजाफा कर देना। लाइक यहाँ पे आपको फिर 16 की जगह 20 को ऐड करना होगा, राइट। So this is how you can calculate the CO2 emission. But apart from this, there are some other points you need to consider. वो ये बात है कि 2% applies to electric car with zero CO2 emission. अगर इलेक्ट्रिक कार है जिसकी ज़ीरो CO2 emission है तो उसके लिए फिर आपके लिए 2% अप्लाई होगी, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, इलेक्ट्रिक कार के हवाले से, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार के हवाले से अगर CO2 emission 1 से 50 के दरमियान हो तो हाउ टू कंसिडर द परसेंटेज? इफ़ द इलेक्ट्रिक रेंज इज़ 130 माइल्स और मोर, इट विल बी 2% and so on. If it is 70 to 129, it will be 5% and so on. And this table will be given to you in the exam. Next, we are considering the rule about the car fuel for private motoring. अगर कार फ्यूल भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है for the private motoring, then the taxable benefit will be calculated as 24,600. Now in fact for this year it has been increased to 25,300. So 25,300 multiplied by appropriate percentage. So this is how you can calculate the assessable benefit, the taxable benefit for the employee. The benchmark amount for providing car fuel for the private use of employee is in this year Finance Act 2022, it is 25,300 and it will be multiplied by appropriate percentage. And appropriate percentage का क्या मतलब है? जो हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि कैसे हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। Remember that there is no reduction in the taxable benefit for partial refund made by for the private use of fuel by the employee. यानी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई ने 1000 का फ्यूल जो है वो खर्च किया है और ये 1000 का फ्यूल के हवाले से उसने 1000 का बेनिफिट हासिल किया, बट वो रीइंबर्स कर रहा है अपने एम्प्लॉयर को 800, तो ये पार्शियल रिफंड है और पार्शियल रिफंड होने से टैक्सेबल बेनिफिट ख़त्म नहीं होगा। सो दिस इज़ अ एक्सेप्शन। शुरू में मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम एक्सेप्शन।
These are the rule I have mentioned in the start, that the taxable benefit, general rule is the cost of providing benefit is taxable, and second it should be time apportioned, and employee contribution से लेस भी हो जाते हैं. और यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि विद एक्सेप्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्राइवेट फ्यूल, लेकिन प्राइवेट फ्यूल के हवाले से बात डिफरेंट है. प्राइवेट फ्यूल के हवाले से बात क्या डिफरेंट है कि जब तक एम्प्लॉई फुल अमाउंट रीपे नहीं कर देता तब तक उसका बेनिफिट सेम रहेगा. मीन्स अगर उसने 1000 खर्च किए हैं प्राइवेट फ्यूल के लिए और 1000 ही अपने एम्प्लॉयर को रीइंबर्स कर रहा है, देन देयर इज़ नो बेनिफिट. बट अगर उसने 1000 का फ्यूल खर्च किया और अपने एम्प्लॉयर को 900 भी रिफंड कर रहा है, तब भी फुल बेनिफिट ही उसका कंसिडर किया जाएगा. Now the question in this regard, Flory was provided with a hybrid electric company car throughout the tax year 22-23. The car has a list price of 29,000 with CO2 emission of 30 grams per kilometer and an electric range of 41 miles. So here we don't have to consider about the CO2 emission of 30 grams per no, we have to consider that CO2 emission, that is 30 grams per kilometer. सो इफ़ इट इज़ 30 ग्राम पर किलोमीटर, तो हमें ये चेक करना है कि कितना बेनिफिट उसकी टैक्सेबल इनकम में, कितने परसेंटेज बेनिफिट उसकी टैक्सेबल इनकम में आता है. सो फॉर 30 ग्राम्स वी नीड टू आल्सो कंसिडर द इलेक्ट्रिक रेंज विच इज़ given as 41 miles. So if 41 miles is range, it will comes in this category. So it is 8% benefit that should be included. So list price of car is 29,000. What we have to do? We have to consider 29,000 multiplied by 8%. So this is the taxable benefit for the employee. It is 2,320. It is 2,320. So in the first case, this is the benefit. In the second case, we have to consider about the Jasper. Jasper was provided with a petrol company car throughout the tax year. Throughout the tax year means पूरा साल provide की जा रही है, इसलिए हम इसे time apportion नहीं करेंगे. The car has a list price of 15,000 with a CO2 emission of 54 grams. Jasper contribute 500 annually towards the use of car. सो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट 54 ग्राम्स की परसेंटेज गिवन है और 54 ग्राम्स पे आपको टेबल मेंशन है कि टेबल के मुताबिक कितनी परसेंटेज कंसिडर की जाती है. दैट इज़ 15%. सो वी नीड टू कैलकुलेट द 15% फॉर द लिस्ट ऑफ प्राइस. लिस्ट प्राइस इज 15,000. multiply by 15%, so it will be 2,250, but we have to reduce the contribution by the employee, that is 500, so the taxable benefit would be 1,750 for the employee. Now in third case, Nigel was provided with a diesel car on 6 July 2022. Now it has been provided on 6 July, not for the whole year, which did not meet the RD2 standard. It had a list price of 22,000 when it was first registered. The car has a CO2 emission of 118 grams. So we have to consider this, that 118 grams को percentage में convert करना है. So in the first step you have to round it down. 118 grams है ये आपके पास, तो उसे आप round down करेंगे तो round down होके ये 115 आ जाएगी. Now you have to consider that 115 minus 55 divided by 5. So it is 60 divided by 5, 12%. So because the car is not meeting the RD2 standard, in the question they have mentioned this fact that which did not meet the RD2 standard. So we have to add 4% above this, means we have to consider this 20%, right? So 12 plus 20% would be 32%. Remember that if the car is not meeting the RD2 standard, we have to choose another other rates which are given to you in the table, and that are 20%. So simply
क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इसे राउंड डाउन किया 115 पे, 115 से 55 माइनस किए टू फाइंड आउट कितने ग्राम्स आपके पास 55 ग्राम से ज़्यादा CO2 मिशन है, तो आ गई 60 ग्राम्स। अब 60 ग्राम्स को आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रूल ये है कि हर 5 ग्राम CO2 मिशन इंक्रीज़ होने पे 1% का इजाफा हो जाता है। तो हमने फाइंड आउट किया दैट परसेंटेज विल बी इंक्रीज बाय 12%। सो द बेसिक रेट फॉर 55 ग्राम्स के लिए उन कार्स का बेसिक रेट के जो RD2 स्टैंडर्ड मीट नहीं करती वो 20 है, तो 20 + 12 32% आ गई। नाउ यू हैव टू कंसिडर व्हाट इज़ द लिस्ट प्राइस ऑफ कार, दैट इज़ 22,000, एंड हाउ टू कैलकुलेट द बेनिफिट फॉर दिस पर्सन इज़ 22,000 multiplied by 32% and then multiplied by 9/12. Why 9/12? Because this car has been provided on July 6. So it will be used by the employee in July, August, September, October, November, December, January, February, March. So the taxable benefit would be 5,280. In the next case, Robin is provided with a diesel car throughout the tax year. Again, throughout the tax year है, इसका मतलब है time portion नहीं करना. Which meet the RT2 standard. The car had a list price of 18,000 when it was first registered. The car has a CO2 emission of 85. So it is easy as compared to the previous one. You have to consider that this is the D case. $85 is already a multiple of 5 minus 55 divided by 5. So it will be 6. 16 is the percentage, basic percentage for cars that have a 55 grams of CO2 emission. So 16 plus 6, total percentage will be 22%. Now you have to consider the cost of car, that is 18,000, and as the benefit has been provided for the whole of year, so it will be 22% of 18,000. So it is 3,960. And next, Vicky start her employment on 6 January 2023 and is immediately provided with a new petrol car with a list price of 25,000. The car was more expensive than her employer would have provided, and she therefore made a capital contribution of 6,200. The employer was able to buy the car at a discount and paid 23,000. Vicky contributed 100 a month for being able to use the car privately. CO2 emissions are 218 grams. So there are many factors in this question. First, the car was provided on 6 January 23. So by the end of the year, 6 April 23, there are only 3 months. Then it is a new petrol car with a list price of 25,000, and the employee has contributed 6,200 for the cost of car. Remember, there are two types of contribution given in the question. One is for the purchase of a car, employee contribution kar raha hai. And second, for the private use of car, he is also contributing. Vicky contributed 100 per month for being able to use the car privately. So we have to consider these factors, and we have to ignore this factor that the car has been purchased by the company for 23,000, because discount ko hum ignore karte hain. So first it is 25,000, which is a list price of car, and list price would be reduced by only 5,000, although the employee has contributed 6,200. But we have to remember the rule that maximum 5,000 of contribution by the employee can reduce the list price. So it is 20,000, right? Another thing is that the CO2 emission is given as 218 grams. If the CO2 emission is greater than 160 grams, it means the rate, the percentage rate is 37%. So we have to apply 20,000, 37%, and for the 3 months period only, because the car has been provided for 3 months in this tax year. So it will be
1850. So 1850 is the benefit for the employee, right? Now you have to consider what amount has been contributed by employee for the private use of car. So the private use of car, he is contributing 100 per month. There are 3 months in this tax year, so 3 months contribution would be 300. So now it is 1550 that will be recorded as the benefit for employee. So this is the case where some different things has been asked. Now the next question is, Stott has the use of company car. The car has a list price of 16,500 and official CO2 emission rate of 88 grams. Calculate his taxable benefit and recalculate your answer in A, assuming that Stott had made a capital contribution of 5,500. So in the first case, if we consider this point, we have to simply calculate his taxable benefit, and in this case we have to ascertain the percentage. If 88 grams is given, we have to round it down to 85, and for 85 percentage, 6% should be added to the basic 16%. So it will be 22%. Remember that the car has list price of official. This is not mentioned whether the car has meet the RD2 standard or not. So we'll consider that the car will meet the RD2 standard. This is the general assumption. So we need to calculate 16,500. This is the answer for A point. 16,500 multiplied by 22%. So it is 3,630 in the first case. Now in the second case, B part, recalculate your answer, assuming that Stott has made a capital contribution of 5,500. As we know, the maximum amount that can be reduced from the cost of asset is 5,000. So we will consider 16,500 minus 5,000 means 11,500. So we have to take 22% of 11,500. So it will be 2,530 in that case. Right, this is the answer for B. Now the C requirement is recalculate your answer in A, assuming that car was a diesel car not meeting the RD2 standard rather than petrol car. So if it is a diesel car, we have to increase the percentage by 4%, and in that case 16,500, because उन्होंने कहा है कि A के आंसर को कंसिडर करते हुए, A की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, तो A में तो आपके पास कंट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं थी. So that is why we are taking the figure 16,500 multiplied by 26%. So it will be 4,290 in C case. In D case, recalculate your answer in C, assuming Stott only had a use of car from 6th October until the end of the tax year, and he contributed 1,000 to his company for use of the car. So C में हमने कैलकुलेट किया था जो बेनिफिट, उसको 6 months के लिए टाइम पोर्शन कर लेंगे, बिकॉज फ्रॉम 6 October to 6th April next year it is a period of 6 months, October, November, December, January, February, March. So the benefit calculated is 4,290 and it will be time portion, and for the 6 month this will be 2,145. Now they are telling us that 1,000 has been contributed by the employee, so this 1,000 will reduce the taxable benefit for the employee, and taxable benefit hence will be 1145. An E point, if Stott's car had an official emission rate of 54 grams, was petrol fueled, was able for the entire tax year, what would be the taxable benefit? So it is quite simple, 16,400, and at the rate of if the contribution is 54 grams, then the CO2 emission is 15%. So have to consider in E part simply 15% of 16,500. It will be 2,475. And last one, Stott's car was hybrid electric car
with an electric range of 39 miles and emission rate of 45 grams per kilometer. You know that if a hybrid car has a CO2 emission between 1 to 50 grams, then we have to consider the table, and in table we have to consider in accordance with the electric range. So this is the table, and 39 miles means, this lies on this, means 12%. So in accordance with this, you have to consider 16,500 multiplied by 12%. So it will be 1980. So this is how this question will be solved. Now you have to consider the these all are examples from BPP book and BPP kit. Now you have to try these questions, illustration 6, 7, 8 and test your understanding 4, 5, 6, 7. These are mentioned here, illustration 6 on 198 and so on, different, these are the PDF page numbers. Now about the company vans. There is a standard benefit of 3,600 a year for employees with private use of a company van, and if private fuel is also provided with a company van, there is an additional charge of 688. Pool cars are said to be pool cars if they satisfy the following condition. These are used by more than one employee, any private use is incidental and not normally kept overnight or near the residence of any employee. Surplus, we have considered this rule already, a 2% percentage applied to electric powered motor car with zero CO2 emission. यानी जिन कार की CO2 emission ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक पावर्ड कार हैं और CO2 emission ज़ीरो है, उनके लिए भी 2% अप्लाई होगी, appropriate percentage. Now we are considering about the beneficial loan. A beneficial loan is one made to an employee below the official rate of interest of 2%. यानी अगर एम्प्लॉय को लोन दे रहा है और उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और वो इंटरेस्ट 2% से कम है, तो इसका मतलब है दिस लोन इज क्लासिफाइड एज बेनिफिशियल लोन. Then in that case we have to consider the taxable benefit. Interest expenses as per HMRC less interest paid. This is the difference कि इंटरेस्ट एक्सपेंस HMRC के मुताबिक 2% के रेट पे कैलकुलेट होने चाहिए थे, आपने लेट से अगर 1% के रेट के हिसाब से कैलकुलेट किए तो डिफरेंस आपका टैक्सेबल बेनिफिट है. हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस एज पर HMRC. Interest as per HMRC is said to be the lower of calculated as per average method and precise method. In accordance with the first method, average method, आपको ये कंसिडर करना है कि साल के शुरू में कितना लोन आउटस्टैंडिंग है और साल के एंड में कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, और उसकी एवरेज लेके यानी उसे 2 से डिवाइड करके उसकी 2% ले लेनी है. In case of average, you have to consider what is the outstanding loan at the beginning of the year and what is the outstanding loan at the end of the year. Divide by 2 will get you an average amount, and you have to take 2% of this average amount. In case of precise method, you have to consider the loan and it should be multiplied by the period for which it remains outstanding. Like if you have taken a loan of 15,000 at the start of the year and after 4 months you have paid 5,000, it means you have used that loan of 15,000 for 4-month period and use the remaining 10,000 loan for remaining 8 months period. So in accordance with this, you have to calculate. Remember that if amount of loan is up to 1,000, then taxable benefit is exempt. Laura was provided with an interest-free loan of 1 lakh on 6 April 22. She repaid 20,000 of the loan on 6 January 23. Required, what is the Laura's taxable benefit in respect of the loan for 22-23? Under average method and strict method. Strict method here means precise method. Comment on whether the strict method will be chosen by either Laura or HMRC. So first we have to calculate in accordance with average method. In accordance with average method, the loan outstanding at the start of the year is 1 lakh and loan outstanding at the end of the year is 80,000. How 80,000? Because 20,000 has been repaid by Laura. So it will be divided by 2. This will give you amount of 90,000. So 90,000 multiplied by 2%. This is the amount to be repaid. This is the amount of interest expense as per HMRC. Or I think this would be 90,000 into 2%. शायद 1800 आता. This is 1800.
Second, we have to consider the strict method. In accordance with strict method, 1 lakh of loan has been used for how many months? This is a 1 lakh loan and 20,000 has been repaid on 6 January. It means for 9 months, Laura has used a loan of 1 lakh. And after paying 20,000 for remaining 3 months, he has used a loan of 80,000. So it will be 1 lakh multiplied by 9 divided by 12 multiplied by 2%, 1500, and 80,000 multiplied by 3 divided by 12 multiplied by 2% is 400. So it is total 1900. So now the comment on whether the strict method will be chosen by either Laura and HMRC. No, Laura will not choose the strict method because strict method gives a taxable benefit, more taxable benefit of 1900 as compared to the average method. And HMRC will also not use that method because HMRC has allowed the lowest value. So in this regard, you have to consider the illustration 9 on page number 208 and test understanding 8 on page number 209. So this is the rule about HMRC. Interest as per HMRC is lower of calculated as per average method and precise method. So that is why they will consider in Laura's case 1800. As regard to other taxable benefit, generally taxable amount is cost to the employer of providing benefit. कोई भी benefit जो employer provide कर रहा है उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कितनी value का benefit employee को मिल रहा है, हमने ये देखना है कि उस benefit को provide करने के लिए employer की कितनी cost खर्च हो रही है. उस benefit को provide करने के लिए employer की जितनी cost खर्च हो रही है वही employee का benefit है. Reimburse expenses, reimbursement by the employer of expenses is taxable benefit for the employee. Means for example, employee के घर के expenses अगर employer reimburse कर रहा है, यानी employee ने अपने बिजली का बिल, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना टेलीफोन बिल, अपने यूटिलिटी बिल्स पे किए और बाद में ये अमाउंट employer ने उसे पे कर दी, तो that is the additional benefit for the employee. But the employee may be able to claim a deduction if the expenses incurred wholly or exclusively and necessarily for their job. बट ये बेनिफिट एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम में नहीं शामिल किया जाएगा कि अगर वो एक्सपेंसेस उसने मुकम्मल तौर पे होली एक्सक्लूसिवली या नेसेसरली जॉब के लिए किए हों. यानी नॉर्मली जो भी आपके प्राइवेट एक्सपेंसेस हैं, समझ लें प्राइवेट एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर पे करता है, आपने खुद पहले पे किए और एम्प्लॉयर से बाद में पैसे ले लिए, तो दैट इज़ योर टैक्सेबल बेनिफिट. बट अगर वो एक्सपेंसेस आपने किए ही बिजनेस पर्पज़ के लिए थे, जॉब पर्पज़ के लिए, तब कोई टैक्सेबल बेनिफिट आपकी इनकम में शामिल नहीं होगा. There are other exempt benefit that these are not added in your taxable income. Free or subsidized meal at on-site canteen or restaurant if available to all employees. Remember that if any benefit is available to all employees, it is said to be exempt benefit. तो चाहे free meal provide किया जा रहा है, चाहे subsidized meal, तो that is said to be exempt benefit. Christmas parties, annual dinner, dances for staff are exempt if the employer incur up to 150 per annum per head. Third one, provision of parking space at or near the place of work, including reimbursement of cost of such parking place, ये भी exempt है. Home workers additional household expenses of up to £6 per week can be tax free without any. Next is reimbursement of expenses by employer when employee is away from home. अगर एम्प्लॉई अवे फ्रॉम होम है और इस सिलसिले में एम्प्लॉई को घर कॉल करने के हवाले से या लॉन्ड्री के हवाले से कुछ पैसे एम्प्लॉयर की तरफ से दिए जाते हैं, तो वो एग्जाम्प्ट हैं. अगर वो यूके में रहते हुए ही अपने घर से दूर रह रहा है एंड इन दैट केस द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम £5 पर नाइट, देन दिस इज़ एग्जाम्प्ट. एंड इफ़ ही इज़ अवे, he is out of country, he is not in UK, and in that case the employer has paid him £10 per night for laundry services and for call to home, then it is exempt. But remember that यहाँ पे एक रूल इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि अगर एम्प्लॉयर इस सिलसिले में एम्प्लॉई को £5 से ज़्यादा पे कर रहा है, यानी वो यूके में ही कहीं आउट स्टेशन पे गया हुआ है
और एम्प्लॉयर हैज़ पेड हिम मोर देन 5 पाउंड, देन ऐसी सूरत में फुल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल बेनिफिट में शामिल होगी। मीन्स इफ़ एम्प्लॉयर हैज़ पेड 6 पाउंड पर नाइट टू एन एम्प्लॉई फॉर such cost like for calling at home or for laundry services, then in that case the whole 6 pound will be included in his taxable income. तो ये नहीं है कि सिर्फ excess taxable income में शामिल किया जाएगा, whole amount will be included. Relocation and removal expenses are exempt up to 4,000. 8,000 means if you are going to locate in another city and you have to incur some expenses like you have to dispose of your house and buy another house in another city. In that case, whatever relocation expenses has been incurred, these are exempt up to 8,000. Which means okay, if you are relocating from one city to another and आपकी cost 10,000 खर्च हो रही है तो उसमें से 8,000 exempt है, 2,000 आपके taxable income में शामिल होंगे. Gift received by resident of his employment from a genuine third party provided the cost from any one source doesn't exceed 250 in a tax year. Payment to approved child carrier is exempt up to 55 for basic and 25 for higher and 25 for additional rate taxpayer. Workplace child care, sports or recreation facilities exempt है. One mobile phone exempt है. Employees contribution to any approved pension fund, whether it is a personal pension fund or occupational pension fund, वो exempt है. Entertainment to employee by reason of his employment by a third party, like ticket provide किए किसी third party ने एक company के तमाम employees को, that is exempt. Long service award in kind like gold watches are exempt up to 50 pound for each year of service of 20 year. यानी अगर 10 साल की सर्विस के हवाले से उसे 500 तक का अवार्ड दिया जाता है तो दैट इज़ एग्जाम्ड. वर्क बसेस सब्सिडाइज पब्लिक बस सर्विस एंड द प्रोविजन ऑफ बाइसाइकिल एंड साइकिलिंग सेफ्टी इक्विपमेंट वो एग्जाम्ड है. यानी ऑफिस आने जाने के लिए अगर वर्क बसेस प्रोवाइड की जा रही हैं या उन पर सब्सिडी दी जा रही है तो ऐसी सूरत में एग्जाम्ड है. इसी तरह आपके पास अगर साइकिलिंग के लिए बाइसाइकिल्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसकी कॉस्ट एग्जाम्ड है. ट्रैवल बेनिफिट विच डोंट कॉस्ट मोर देन 50 पाउंड वो एग्जाम्ड है. द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एसेट और सिक्योरिटी सर्विस बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी एसेट यानी गन वगैरह प्रोवाइड की जाती है तो दैट इज़ एग्जाम्ड. वेलफेयर काउंसलिंग सर्विस अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉइज. प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉइज परमानेंट हेल्थ इंश्योरेंस ये एग्जाम्ड है. Pension advice of up to 150 per employee per tax year is exempt if available to all employees, and awards for up to 25 under staff suggestion schemes ये भी exempt है. But again which is available to employees for suggestion outside their duties. यानी employees अगर कुछ suggestion देते हैं जिससे benefit हो सकता है business को तो ऐसी सूरत में उन्हें award दिया जा सकता है. उस award की 25 pound तक की amount exempt है. The cost of work related training course यानी जब भी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कराता है तो इसका मतलब है दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर नॉट द एम्प्लॉय. एंड सम बेनिफिशियल लोन जिनकी अमाउंट अप टू 10,000 हो, दीज आर सेड टू बी एग्जाम्ड. नाउ फिंजी अर्न्स 15,000, ही अंडरपेड इनकम टैक्स बाय 50, he has a company car with a taxable benefit of 3905. We have to calculate his tax code. So this is the question which is mentioned in only BPP book. How to calculate the tax code is not mentioned in the Kaplan book, so we have to consider it in a little detail. So for employee tax code, an employee's tax code indicate the amount of tax free pay that they are entitled to. In working out the code, HMRC used the following calculation. Allowances like personal allowance, pension contribution, higher rate relief and expense deduction ये consider किए जाते हैं. Less deduction reducing tax free pay, benefits, untaxed income and tax underpayment, gross up in accordance with the rate of tax 100 by 20 or 100 by 40 or 100 by 45 whichever is allowance to set the to be set against pay. This is said to be the allowance to set against pay. We will consider it with the help of example. This will make it more clear. To obtain the code number, the last figure is removed and replace it with a letter. अब लास्ट फिगर आपने रिमूव कर देनी है कोड नंबर फाइंड आउट करने के लिए और उसकी जगह लेटर लगा देना. अब लेटर में LMN BR DO OT किस वक्त लगाया जाएगा? L लगाया जाएगा फॉर पीपल एंटाइटल्ड टू फुल पर्सनल अलाउंस, उनके लिए L आखिर में कोड लगाया जाएगा. M फॉर पीपल हु आर रिसीविंग अ ट्रांसफरेबल पर्सनल अलाउंस, जिन्हें आपस में जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है अलाउंस.
एन लगाया जाएगा फॉर पीपल हु हैव इलेक्टेड टू गिव अ ट्रांसफ़र अलाउंस टू देयर स्पाउस, जिन्होंने दिया अलाउंस उनको एन लगाया जाएगा, यानी 2 स्पाउस में से एक पर्सन जो अलाउंस रिसीव कर रहा है उसके लिए कोड में एम लगाया जाएगा, जो अलाउंस दे रहा है उसके लिए एन। बी आर बेसिक रेट टैक्स के लिए डिडक्टेड विदाउट अलाउंस, डी ओ हायर रेट टैक्स डिडक्टेड विदाउट अलाउंस, एंड ओ टी पर्सनल अलाउंस हैज़ बिन यूज्ड और स्टार्टेड अ न्यू जॉब एंड डू नॉट हैव अ P45 फॉर्म। सो हम बात करते हैं फिंजी अर्न्स 15,000 इन 21-22 ही अंडरपेड इनकम बाय 50. He has company car with a taxable benefit of 3905. So we have to consider the personal allowance less car benefit less tax underpaid 250. So this is a 8415 figure. So last figure of 5 will be removed, and instead, as the person has full personal allowance available, the code L will be added to this. So your answer will be 1622L. How this 250 has been calculated? Because Frenzy has an income of 15,000 जो कि बेसिक रेट बैंड पे लाई करती है, तो इसका मतलब है इसने जो 50 का टैक्स बचाया है ये कितनी इनकम पे बचाया होगा, 50 डिवाइडेड बाय 20%. सो इट विल बी 250. जैसे अगर आप 250 पे टैक्स बचाते हैं 50, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, 250 का 20%. तो हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 50 का उसने टैक्स सेव किया है, तो 20% से इसे डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं कि उसने कितनी इनकम पे टैक्स सेव किया है, दैट कम्स अस 250.